Good morning students. How are you all? Today children we are going to start new chapter number 8 wind, storm and cyclone session 1. अब ये चैप्टर में बच्चों हम लोग विंड के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सब चैप्टर्स आपको इसलिए सिखाए जा रहे हैं कि जब ऐसी कुछ नेचुरल कैलेमिटीज के अंदर आप फंस जाए, right? So whenever you get stuck up into this type of natural calamities, children, you can help other people also and you can save life of yourself also and your neighbors or your surrounding people also. So let's start with our new chapter, wind, storm and cyclone. Now children, before starting the chapters, we are going to learn about certain important points. उसके points हम सब discuss करेंगे और उसके बारे में details में पढ़ेंगे, right? So first is cyclone. Now hearing the word cyclone, children, we get tensed, right? In Khambhat last year near Diwali, there was an talk from the government that sometimes cyclone can come immediately, right? तो तभी उन्होंने बोलते ना कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि साइक्लोन आने की संभावना है, तो हमें बहुत ही चौकन्ना रहना है, राइट? सो जो खंभात का हमारा गल्फ ऑफ कैम्बे का जो कोस्टल एरिया है उसे वेकेंट करवाया था, राइट? द बीच एरिया ऑफ खंभात वाज वेकेंट एट दैट टाइम. व्हाई? बिकॉज देयर वर चांसेस बिफोर 3-4 months also in summer season also there was an intuition about cyclone, right? So children, today we are going to learn about cyclone. Now what is cyclone? Cyclone is nothing but a spiraling wind formed in tropical seas due to the formation of low pressure. ये साइक्लोन क्यों बनते हैं? ये जो ट्रॉपिकल सी का जो एरिया होता है उसमें स्पाइरलिंग यानी मींस लाइक अ स्प्रिंग, ओके, लाइक दिस there is a low pressure exerted in the tropical sea. Okay, so this formation of low pressure region in sea and moving at a speed of 120 kilometers per hour, right? हम एक घंटे में 60 to 70 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये जो साइक्लोन है, राइट, उसका जो प्रेशर है, उसका जो फोर्स है, वो 120 किलोमीटर की स्पीड में वो बहुत ही तेजी से आता है, राइट? और वो जो लो प्रेशर है वो एक चक्रवात का फॉर्मेशन होता है वो क्रिएट करता है एंड इट इज गोइंग स्मॉलर एंड स्मॉलर इनटू द beneath of the sea and ocean. Example to prove moving air exerts pressure. अब air क्या होती है? Air is everywhere, right? But blowing air is called as wind. अब जब air ऐसे चलती रहती है उसके molecules बहुत ही दूर होते हैं, right? Slowly by slowly it goes. But जब wind blow होती है तो वो molecules और तेज से भागते हैं और speed में भागते हैं, right? So when the wind is blowing, it is called as moving
नेक्स्ट, लीव्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड। जब बहुत ही तेज हवा होती है, ऐसे तो लीव्स गिरते नहीं हैं, जब वो येलो हो जाते हैं या फिर वो पक जाते हैं तभी वो नीचे गिरते हैं अपने आप। बट व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म और अ heavy winds are blowing, okay, strong winds are blowing children, that time what happens, leaves starts falling down because of the pressure on the leaves. So this was about moving air exerts pressure, यानी हवा जो चलती है वो अपने साथ प्रेशर को भी लाती है, right children? Now what is low pressure? We have seen that cyclone is a formation of low pressure in the region in sea. So low pressure, a region of warm and moist air which is at low pressure than the surrounding pressure. अब आप देखोगे कि दिन के टाइम में जब धूप गिरती है, राइट, तो क्या होता है, सी और ओशन का पानी गर्म होता है, तो वो जैसे ही इवेपोरेट होने के लिए गर्म होता है तब उसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे कि हमने कुकर में कुछ पकने के लिए रख दिया, राइट, तो उसके अंदर जैसे ही वो वेजिटेबल्स या पल्सेस उबलते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और विसल से वो बाहर आते हैं। सेम वे व्हेन द प्रेशर इज लो एंड कंपेयर्ड टू द सराउंडिंग से अगर उसका प्रेशर कम रहा, दे फॉर्म अ स्पाइरल फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज प्रेशर? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ओवर अ सरफेस ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर। जैसे कि हमने ये फिंगर लेके ऐसे हैंड्स को पुश किया, वो नीचे जा रहा है बिकॉज हमारा हैंड का प्रेशर ज्यादा हो रहा है, राइट। इफ वी विल जस्ट टच इट विल नॉट गो डाउन, बट इफ वी विल अप्लाई फोर्स देन आवर हैंड इज गोइंग डाउन। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? सो द प्रेशर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर, यानी जो एयर होता है वो फोर्स क्रिएट करता है ओवर द सरफेस एंड इट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर डिपेंडिंग अपॉन द area. So example to prove that increased wind speed reduces air pressure. अगर wind speed increase होती है तो air pressure कम होता है. What is the reason? Now when the wind speed is very high, जब बहुत ही तेज हवा चलती है children, तब क्या होता है, roofs जो बोलते हैं ना हर्ट्स होते हैं, उसके रूफ उड़ने लगते हैं क्योंकि उसके ऊपर की जो छत होती है वो टिन शीट से बनी रहती है, राइट। इट इज मेड अप ऑफ very thin iron sheets, okay, so it is of house also and go downs also, hurts and go down and blow off. Why it is blowing off? When there is a wind, जब भी बहुत तेज हवा चलती है तो हर्ट्स और go down के जो ऊपर के छत होते हैं वो क्यों उड़ जाते हैं, right? That is because when the wind blows hard over the roof, the air pressure falls. यानी जब wind बहुत तेज से चलती है तो जो सराउंडिंग का एयर प्रेशर है वो उसके सामने कम पड़ जाता है और वो उसके नीचे दब जाता है। Thus the air pressure below the roof exerts force and blows the rooftop. जैसे क्या होता है, ऊपर से हवा चल रही है और नीचे प्रेशर, उसके नीचे एयर दब रही है, तो वो एयर हमारे घरों में जो होती है वो लो प्रेशर क्रिएट करती है और ऊपर से हैवी प्रेशर यानी ऊपर से स्ट्रॉन्ग विंड की प्रेशर्स होती है, तो उससे क्या होता है, जो छत होती है वो उड़ने लगते हैं। इसीलिए विलेजेस के अंदर सब लोग क्या करते हैं, जब भी समर सीजन खत्म होने को है और रेनी सीजन आ रही है तब बहुत टाइम विंड स्पीड्स बढ़ती है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बोलते ना तूफान आता है, राइट। तो वो तूफान की जब सिचुएशन क्रिएट होती है वो रेनी सीजन से पहले या तो फिर जो समर सीजन एंड होती है तब ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं सेफ्टी के लिए, जो विलेजेस में रहते हैं, जो लोग झोपड़े में रहते हैं, हट्स में
गवर्नमेंट हमें ये सब